And our lead story, a big development in the RG rape and murder horror. Well, the CBI has arrested the ex-principal of the RG Medical College and Hospital, Sandeep Ghosh, in connection with the rape and murder case. Remember, earlier, the central agency had arrested him in the financial irregularities case or the corruption case, but now he has been, arrested directly in connection with the rape and murder case. A huge development there. Remember, there are charges of evidence tampering against him. The allegation on which he's been arrested is that he tampered with the evidence and also tried to destroy the evidence. This has been a big charge by the doctors as well. So CBI arresting Sandeep Ghosh, and also a Kolkata cop has been arrested in connection with the rape and murder case as well. Suvendu Adhikari of the BJP in fact has asked the Kolkata Police Commissioner to be suspended. What we've been given to understand is the officer in charge, OC of the Tala police station, and also Sandeep Ghosh, the former principal of RG Medical College and Hospital, have been arrested for what sources are telling us is missing evidence and delay in registration of the FIR. Now, the delay part is something that has been discussed extensively in the Calcutta High Court and the Supreme Court. Both the Calcutta High Court and the Supreme Court have repeatedly questioned what stopped the hospital authorities from registering an FIR. But the missing evidence part is something that is emerging now. What is this missing evidence? What part of evidence was not handed over to the CBI? Or what was it? Why was it concealed? If there is any allegation of such, remember there have been questions raised by several quarters on evidence tampering or on a cover-up, etc. That is something the Kolkata police have repeatedly denied. But it seems the CBI has some material based on which they've made these arrests. What that material is, what piece of evidence is missing, is something that we are not sure about, and something that is, the CBI is yet to reveal. So that's something that we'll have to wait and watch. Well, this as a deadlock between the government and the protesting doctors continues. Well, we saw how protesting doctors reached the Chief Minister's residence, but they refused to meet her. They say that the meeting must be telecast live. They say this should be done for the sake of transparency. Meanwhile, Chief Minister Mamata Banerjee says that I cannot telecast the meeting live. If the Supreme Court asks me to do so, then I will. But she also said that you've made me wait twice and this is disrespecting the Bengal government, but that impasse just doesn't seem to end. The victim's mother, in fact, has also urged the Chief Minister to, in a sense, concede to the demands of the protesting doctors, but there seems to be no end to the stalemate. ব্যাপারটা বিচারাধীন আছে, তোমাদের মিনিটস আমি করে দেবো। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও, আমি সবাইকে বলবো যারা যারা আসতে চান তারা দয়া করে আসুন। তাহলে আপনারা যদি নাই এসে বাড়িতে মিটিং করেন, তাহলে আপনারা আমাকে চিঠি দিলেন কেন? এত অসম্মান কেন করছেন? অনেক অসম্মান করছেন আপনারা। আগেও 3 দিন আমি 2 ঘন্টা করে অপেক্ষা করেছি। আমি যার জন্য আপনাদের কাছে নিজে ছুটে গিয়েছিলাম। প্লিজ এইটুকু রেসপেক্ট তো দেবেন। আমি তো আমারও দৌড়াত আছে তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের বলছি, শোনো, তোমরা ছোট, আমি বড়, কিন্তু মনে রেখো আমি আন্দোলন করার লোক। আমি আন্দোলনকে মর্যাদা দিতে জানি, তাই তোমাদের কাছে তোমরা আসার আগে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। তোমাদের আমি বলছি, কেউ কেউ আমি জানি না কারা এর মধ্যে আছো কারা নেই, কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকেই বলবো, ফরগেট পলিটিক্স, মানুষের স্বার্থে এসো কথা বলো। हम जैसे पहले दिन चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो यहाँ पर आकर पता चला कि वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे वीडियोग्राफर से हो, ताकि इन फ्यूचर पब्लिक को क्लैरिटी रहे कि ये जो मीटिंग हो रहा है वो उसमें क्या बातें हो रही हैं और क्या क्लैरिटी इसके लिए। उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ चर्चा के बाद। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि ठीक है, वीडियोग्राफर अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट मीटिंग के बाद हमें वीडियो आप दे दीजिए, हम वो अपने पास ही महफूज रखेंगे। और जो मीटिंग के मिनट्स हैं, यानी हर मिनट में क्या क्या हो रहा है मीटिंग का, उसको लिखा जाता है।
तो वो साइन करके हमें दे दिया जाए। उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुई तो हमें जाना ही चाहिए। तो हम तैयार हो गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कहिए हमें भी बहुत दुख हो रहा है, मीटिंग नहीं हो पाया। वक्त कंप्लीट हो गया। The doctors say transparency and clarity. They say the people who are backing these protests, and obviously there has been some amount of public support for the doctors' protest. Given what's happened, given the brutal rape and murder of a young doctor at the Arjikar Medical College and Hospital, given what the family has alleged, that the police hurried things up for them. Yesterday, the CBI came to Arjikar Medical College and Hospital with the family. Today, the CBI has arrested Sandeep Ghosh in connection with the rape and murder case, and also this is in connection with alleged missing evidence and delay in registration of FIR. Now the delay is something, like I said, has been discussed in detail in the Supreme Court and the High Court. But obviously the doctors are continuing their protest because they say that the family has given them this responsibility. They also add that, this is something that the public must know, given that they've received so much public support for their thing. However, the government says that, look, this is a sub judice case, and if there's any live streaming of a meeting, let the court order it, and we have no objection doing it or sharing it with you. However, till the time there is a very clear order from the court, on this one point, the government has stuck to its guns and said that there will be no live streaming. Recording will be shared, provided you get a permission from the Supreme Court. Remember, the Supreme Court is hearing the case, and that seems to have been the sticking point, because eventually what we were given to understand is that there was an agreement on minutes of the meeting, but by then the officials had left, and the doctors, remember, were outside the Chief Minister's house from around 6:30 to around 9. So that's about 150 minutes or 2.5 hours. And in this context, obviously, whether the doors remain open for a future discussion to end this impasse, the answer is yes, the doors do remain open. Whether it will happen tomorrow, day after, not unclear. So, well, there's palpable outrage this as justice remains elusive for the victim. But looking at some more news from Kolkata, well, a blast was reported, in fact, in the heart of the city, and the entire area was cordoned off. One person was seriously injured in this blast. It seems to be a minor explosion, but what actually triggered it, that is not certain yet. Well, the BJP says that there should be an NIA investigation into this case. Till now, the incident, after the incident, the photographs reached to me, and the amount of blast explosion that happened, it is a great, it is of great concern, because I think it's a heavy explosive. Otherwise, this kind of incident could not happen. The amputation of the wrist and the whole palm, it was not possible without heavy explosive. So it should be investigated thoroughly. Especially, I feel that investigation by the NIA is required. Without NIA, I don't think the West Bengal police has that kind of professionalism to investigate this incident. And moving now to some other news, well, Union Minister Nitin Gadkari's sensational claim. He has said that he was approached by an opposition leader with an offer to be the Prime Minister ahead of the Lok Sabha polls. Nitin Gadkari says that, well, I was not tempted by this offer. In fact, he said that I have never had the aspiration to be the Prime Minister, but certainly an absolutely sensational claim, a political bombshell there, with Nitin Gadkari claiming that he was approached by an opposition leader with the Prime Ministerial offer. Take a look. एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं. ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. और आज पत्रकारिता में आप सब लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करके कहा गया कि
जुडिशरी, बाद में पत्रकारिता, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, और इन सब जगहों पर ये चारों जब अपने आदर्शों के ऊपर चलेंगे तो ही लोकतंत्र यशस्वी होगा। And interestingly, Nitin Gadkari was speaking in Maharashtra. But looking now at news from poll-bound Jammu and Kashmir, well, terror and militancy seem to be at the center of the poll discourse in Jammu and Kashmir. In fact, the Prime Minister has vowed a white paper for terror victims in Jammu and Kashmir. This as the opposition parties, including National Conference, say that, well, terror is far from over when it comes to the valley. Take a look. Four days ahead of the first phase of elections in Jammu and Kashmir, Prime Minister Narendra Modi hit the campaign trail. Addressing a large gathering in Doda, Prime Minister Modi described assembly elections a fight between dynastic parties and the youth of Jammu and Kashmir. He even blamed the opposition parties for terrorism. नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे। As Prime Minister Modi was addressing the election rally, security forces were engaged in major counter-militancy operation in the nearby Kishtwar area, where 2 army soldiers were killed in action and 2 others injured during an ambush attack by terrorists last evening. Reacting to the Prime Minister's allegations, former Chief Minister Omar Abdullah said that instead of dynastic barbs, Narendra Modi should have talked about the terror attacks in the Jammu region, which was free from militancy until a few years ago. वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। In election season, the politics around terror appears to have become a double-edged sword for the BJP, as the rising graph of terror attacks in Jammu region blunts its narrative. With Nazir Masoodi, Bureau Report, NDTV. And moving now to news from Telangana, when an absolutely shocking incident in which a bus hit a woman. In fact, the bus ran over the woman. The woman has died, and this seems to be an extremely busy road in Telangana's Madhapur, where this accident took place, and the horrific accident caught on camera. The woman run over by that bus. News now from Assam. Well, mobile internet services will be shut down in Assam on Sunday, in fact, from 10 a.m. And this amid a written recruitment examination for grade 3 posts. However, voice calls and broadband-based connectivity will remain functional as per the notification, but mobile internet services will be suspended from 10 a.m. onwards. News now from Haryana. Well, tragic news as 2 people died after a car drowned under an underpass, in fact, and this amid massive waterlogging in Haryana after 2 days of incessant rain. Take a look. The scene of the biggest tragedy in the 2-day deluge in the Delhi NCR. On Friday evening, an SUV heading from Gurugram to Faridabad got stuck in water in this underpass in Old Faridabad, and the 2 bank employees inside drowned. The deceased, Punyashrey Sharma, he was a manager at HDFC Bank in Sector 31, Gurugram. The second deceased, Viraj Dwivedi,
also worked as a cashier at the same bank. What the eyewitnesses are saying here is that this is not a solo incident that has happened here in this old railway bridge underpass, but it has happened on regular basis. Every monsoon season this happens, but there is no civic agency who comes forward to help with this issue or to make sure that this does not happen yet again. This tunnel is notorious for waterlogging, and this is not the first time there has been an accident at this spot. पानी एक यहीं फतेहपुर चंद इलाका नहीं 21 ABCD का और बडगल तक का पानी आता है। वो पानी सारा मूव बन के ना और ये अंडरपास में पानी इकट्ठा होके और उस वजह से जो दो ये गाड़ी में आदमी सवार थे वो उनको जजमेंट नहीं था कि पानी के इतनी हाइट होगी जैसे 10 फुट के लगभग, तो उन्होंने सीधी गाड़ी अंदर पानी में कर दी। जब गाड़ी अंदर जाके ना उनकी नहीं क्रॉस हुई तो वो गाड़ी में से खुद निकले, पब्लिक भी गई और पुलिस भी गई, तो तभी एक आदमी को उस टाइम ही निकाल लिया था और तुरंत उसको फोर्टिज हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। दूसरे को रेस्क्यू करके ना सुबह मॉर्निंग में निकाल दिया था। So we clearly saw that the negligence of civic authorities costed 2 people their lives. While the police is saying that due to their own ignorance and they did not heed to the barricadings and the sign that was written there, and the riders were also stopping there from speeding their cars, they did not listen to them and went inside the tunnel. But the question that still remains on the large is, what was the civic body actually doing when the tunnel was getting waterlogged and 2 people lost their lives? With camera person Kamal Khan, this is Anushka Garg for NDTV. And now a big exclusive with retired Supreme Court Judge Justice Hema Kohli, who talks about how the people of the country should have faith in the Supreme Court and also her journey as a woman judge. Take a look. Was it difficult? क्या ये मुश्किल काम है क्योंकि इतनी कम महिला जज यहाँ तक पहुँची हैं सुप्रीम कोर्ट तक। What do you feel कि मुश्किल काम है? कैसा आपका अनुभव रहा इतना लंबा दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का? वुमन जज बनने से पहले वी ऑल कम फ्रॉम द बार, तो जब वकालत भी एज ए लेडी आप ऑप्ट करते हैं, और जब मैंने की थी मिड 80s में, तब बहुत मुश्किल माना जाता था क्योंकि हमारे को शायद 10-15 से ज़्यादा विमेन लॉयर्स हाई कोर्ट में नहीं थी, और उनमें से भी मेरे ख्याल से हैंडफुल रह गई थी जो एक्चुअली सीरियस प्रैक्टिस में थी। तो वुमन लॉयर बनना भी उतना ही मुश्किल था, और उससे एक दर्जा ज़्यादा मुश्किल था जज बनना। जुडिशल ऑफिसर्स एग्ज़ाम दे के बनकर वुमन जो करियर में आती थी उनको थोड़ा आसान था, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने आप को उस स्थिति पे लाना जब आपको कलीजियम रिकग्नाइज करे और सोचे कि आपका बार पे से बेंच पे आने से बेंच का फ़ायदा होगा या आप इस लायक हैं, वो जर्नी उस शुरुआत से लेके आखिर तक मुश्किल रही। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जज बनना मुश्किल था, अ प्रैक्टिसिंग वुमन एंड अ सक्सेसफुल वुमन लॉयर बनना भी उतना ही मुश्किल था। और नेक्स्ट स्टेप था कि आपको रिकग्नाइज़ किया जाए कि आपका काम इस लायक है कि आपको कंसिडर किया जाए कि आप वुमन जज बने। तो रास्ता तो मुश्किल ही है, आप कहाँ तक उसको सस्टेन करते हैं और आप में कितनी हिम्मत है सिचुएशंस को डील करने में, वो ज़रूरी है हर वुमन लॉयर का याद रखना और हर वुमन जज को एक्सपीरियंस करना। तो अभी आपको कहीं एनी टाइम यू फेल्ट कि कहीं ना कहीं वुमेन जज जो है वो उस इक्वलिटी में नहीं माना जाता उसको, जो एक जो मेल जज है उसको कहीं कंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट कभी आपको फील हुआ एज ए जज वुमेन जज? एज ए जज कोलीग्स के साथ डिस्कम्फर्ट इतना नहीं हुआ। आई मस्ट से कि कई कोलीग्स तो बहुत सपोर्टिव मिले जिन्होंने इनकरेज किया। हमारे सीनियर पीयर्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे और उनको लगता था कि अच्छा है कि हम में से कुछ ही लड़कियां लेडीज़ थीं जो जज बनी फ्रॉम द बार, और आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट में हैंडफुल थी। सुप्रीम कोर्ट में मेरी कोर्ट से मैं फ़र्स्ट महिला जज हूँ जो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आई। बट कई दफ़ा होता था कि अच्छा मदद नहीं करी तो कुछ बुरा भी नहीं किया, नुकसान नहीं किया। एज ए कोलीग यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क। आई डोंट थिंक हम में से भी कोई ऐसा एज ए वुमन सोचता था कि हमें कोई लीवे देना चाहिए या हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट मेरे को ये ज़रूर लगता है, और मैंने पहले भी ये बात कही थी, कि जब चीफ जस्टिसेस स्टेट हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी कमिटीज़ होती हैं। उन कमिटीज़ में
विमेन को ये क्यों लगता है हर बार कि विमेन जजेस को ही महिला या बच्चों या जुवेनाइल कमिटीज़ में होना चाहिए? ये क्यों नहीं लगता कि विमेन को आईटी सेक्टर्स में, जो कोर जुडिशियल वर्क के सेक्टर्स हैं, उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन इक्वली आईटी में है, इक्वली कोर कॉम्पिटेंस एरियाज़ में है। इसी तरह जुरिस्डिक्शंस में भी ज़रूरी नहीं है कि विमेन ही फैमिली कोर्ट की अपील्स करें। नॉर्मली माना जाता है कि फैमिली कोर्ट में विमेन ही अच्छी रहती हैं। बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं जो मेल्स ने भी डिलीवर की हैं, जिनमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस कॉज को। तो ये जेंडर इशू ऑन द डायस इज शुड बी absolutely abhorrent. What an absolutely fascinating journey. And well, that's all the time that we have on the show. From all of us here, goodbye.